Good evening, viewers. You're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. We come to you right now from the Alu grounds, Manali. The worst hit, the epicenter of the flash flood tragedy that unfolded. The worst that Himachal Pradesh has seen since 1995. That's what every person you speak with will tell you. What's really gotten people a little tense are the rolling clouds there in the hills. There are dark clouds rolling in. Will it rain again? That's the big question. Once again, we'll show you, take a look at, this was a road. All of that completely swept away. All that's left is rubble. I'll turn around and I'll ask Pawan to actually get you a glimpse of what lies here. This, again, was a road. All you see are big boulders, residential houses completely washed away by the angry waters of the river Beas. On the other hand, you can see trucks rolled over, vehicles, little tempo carriers completely smashed. This particular Hyundai showroom completely gone. This entire building is going to come down any time because look at the devastation that the floods have wreaked, because there's just no base on which it stands anymore. My camera person Pawan Kumar and I walked from Kullu all the way to Alu grounds, and this is how we walked through. This was how we walked through. The people we met were and their stories were heartbreaking. Medical emergencies, primarily. A woman who was bitten by an old woman with a snake bite being rushed, but there's no way to go because the road which has been opened right now is seeing traffic jams of about 14 to 50 hours. The only way to get to a hospital, because nothing is functioning in Manali, no electricity, no water, in terms of phone connectivity, has just been restored an hour ago. But all of them forced to take this road. I want to just cut across to our ground report coming in from Kullu all the way to Manali. I'm standing exactly where half a hotel was swept away. This is the road. I'll ask Pawan to show you. Can you see? That's the road, and that's part of the hotel which got swept away. That's the Shirar Hotel. I'll ask Pawan to show you. That's the Shirar Hotel on the Kullu-Manali highway. Half of it has gotten swept away, and that's where the road has cut. You can see helicopters there, first helicopter there, which has finally been able to get through to Manali, because the valley, even though the Kullu valley had cleared up, the Manali valley is a little narrow, so a little difficult. कहाँ से आ रहे हैं जी? बिहार. आगे से? तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत नहीं ठीक है? क्या हुआ? पेट में दर्द है. क्या बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है आगे? पता नहीं, देखा नहीं मैंने. आगे जाओ और अपना ट्रैवल वापस. क्या हुआ इधर? इनको क्या हुआ है? पेट में दर्द है. पेट में दर्द है. कहाँ? कुल्लू जा रहे हैं? कुल्लू हॉस्पिटल. कोई मिला नहीं उधर से? उधर यहाँ से गाड़ी आई ना, गाड़ी में आए, फिर यहाँ से आके गाड़ी आएगी, उसमें जाएंगे. अब रोड बंद पड़े हुए ना सारे. इस चक्कर में यहाँ से जाना पड़ेगा. You know, it's tragic. She's now being carried because this poor girl has a really terrible stomach ache. It's tragic because there's just no help, it seems. You know, the rain might have stemmed, but this is the apathy that continues. आप कहाँ से हैं सर? डोबी. वहाँ पर कैसा है अभी? बहुत बुरे हालात है. अभी तो मुश्किल हफ्ता 10 दिन लग जाएगा. So this is the road that has completely been washed away to Manali. We are coming in from Kullu right now. We're going to try and attempt by foot to reach Manali, which is still about, from here, easy 50 kilometers. So we're going to try and get as close as possible, because that is where, at least right now in this region, is the true extent of the devastation. Kasol and Manali. We're going to try and attempt to get to Manali there. So we finally managed to reach Manali town. You can see still a lot of tourists that are stranded right here, waiting to get home safely, looking for a mode of transport. And I'll actually show you, because you know it's been from where we have come in, the road has been washed away from various sides, and a big example right in front of me, right before
Manali town. The entire road, the whole chunk of it, completely washed away. You know, if you've seen those visuals coming in of many tourists taking of how the entire road in Manali had caved in, well, this is the beginning of it. There's nothing left. It's a huge crater. All of it practically washed away by the river Beas. What we're going to attempt now is we've come to Manali, we're going to try and make our way to Alu ground. That is where the maximum devastation happened when there was a surge in the water levels of the Beas. So these are what villagers are actually doing. They're cutting across to Kullu, getting basic essentials and coming back. This resort that you see, part of it has been washed away itself, but you know, that person can allow all of these people who are, you know, I'll show you that. You know, these are people from villages who are picking up basic essential commodities and going to their village. You can give access, and there's no access. I met somebody with a medical emergency, a father taking his daughter who's got a debilitating stomachache. Let me ask them, ma'am, आप मुझसे बात करेंगे, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम भुंतर से आ रहे हैं मैम। भुंतर से आप चल के आ रहे हैं? नहीं, यहाँ तक गाड़ी में। यहाँ तक गाड़ी, फिर यहाँ से निकले। आपका गांव आगे है? हाँ, पतली कुल जा रहे हैं हम। यहाँ से पतली कुल जा रहे हैं। कितना बुरा हाल है आपके यहाँ? अभी पता नहीं, अब जाके देखेंगे। आप कुल्लू में थे? हाँ, मेरे मायके ना उधर पतली कुल में वो सारा बह गया है, तो मैं भुंतर से आई अभी मिलने उनसे। मिलने आए? हाँ, उन्होंने ना कुछ सामान निकाला, बस जो पहने कपड़े उसी के साथ निकल गए वो बाहर। बस जो पहने उनके साथ बाहर? के साथ लगभग 15 करोड़ का नुकसान होगा मेरे मायके का। आपके पूरा पतली कुल जो गांव है? हाँ, पतली कुल से उस साइड है माहिली गांव। माहिली? हाँ, वो सारा पानी वानी कुछ नहीं है वहाँ पर? कुछ नहीं है, अभी कोई सुविधा नहीं है, लाइट है ना पानी है। फोन भी आज हुआ, आज पता लगा हमें कि ऐसा ऐसा हुआ। मैं वैसे ही चल पड़ी। तो आप सामान लेके जा रहे हो उनके लिए? मैं कुछ खाने पीने का सामान डाला जितना मेरे से उठाया जा रहा था। अकेले आए हो आप? हाँ, नहीं, बेटा आया था मुझे यहाँ छोड़ने, वो वापिस चला गया। हाँ हाँ। In terms of, you know, while the rescue relief operations are on, the villagers here have been left to themselves. Medical emergencies, they can't even get. This is the Manali Valley from here on. And there's nothing here is what we've been told. Everything has come to a standstill. Anyone for medical emergencies, for basic water, drinking water, has to be taken to the other side. Now there's somebody coming in with a medical emergency. You can see there's an elderly lady that is being taken by her family. She's on a drip. And she's been taken through. I don't know how she's going to make her way. She was brought in on a stretcher till now. And I really don't understand how this poor lady is going to actually make her way all the way to the other side, because there's no way she'd be able to wade through, you know, the waters of the other side. This has happened right now, just about on our watch. You can even see the mud trickling in from the top. But these are the visuals which we will see in days to come. They couldn't even get out, and now people are coming in. आप कौन है ये? आप जानते हैं? मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं टैक्सी वाला हूँ ना। एकदम से मुझे बोला है कि इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, तो मैं साथ में चला हूँ हेल्प करने के लिए। आप हेल्प करने के लिए साथ में चला हूँ। पर यहाँ से कैसे जाएंगे आप? करना पड़ेगा कुछ। क्या करना, मजबूरी है। क्या बात हुई है मैडम? तो स्नेक ने वो थोड़ा सा कट लिया ना। सांप ने काट लिया है? स्नेक बाइट का केस है? हाँ जी। यहाँ पर तो बिल्कुल नीचे कहाँ से आप? ये बोलते रिजॉर्ट वाले से पूछेंगे, रिजॉर्ट वाले के रिजॉर्ट वाला तो हाँ इनसे पूछे जाएंगे ना। अब क्या करना, पतलीकुल में फैसिलिटीज है नहीं, कुछ नहीं है। लेफ्ट बैंक की रोड सारी ब्लॉक्ड है। जी जी। लाइट भी नहीं है। मनाली भी जाना कुछ भी नहीं है, मालूम है जी। तब क्या करना, अब जाना पड़ेगा ना, जान क्या ये तो। आप कहाँ से हैं? हम लोग तो नगर से जी। आप नगर से वहाँ से यहाँ तक आए हैं? क्योंकि पूरा रोड जो ब्लॉक चल रहा है उधर। ब्लॉक है ना मैम, तो फिर नीचे नगर पुल भी गया है, वहाँ से हमने टेम्पररी पौड़ियाँ चढ़ के आए हैं। ये ऐसे आ रहे हैं? क्या करना, सारे हम लोगों को मजबूरी हो गई आजकल। आप लोगों ने प्रशासन को फोन किया? किसी को फोन किया? प्रशासन को कहाँ से करें? एम्बुलेंस से आए हैं। हाँ जी। एक्चुअली ये CSC पतलीकुल से 108 एम्बुलेंस से आए ना। एम्बुलेंस से आए हैं वहाँ? हाँ जी, यहाँ से हमारी नेक्स्ट एम्बुलेंस आएगी अगली साइड से। अगली साइड से दूसरी एम्बुलेंस? जी जी जी, क्योंकि ऊपर से छोटा रोड है ना, वहाँ तो कंजेस्टेड है जगह। पर कोई आपके यहाँ पर कोई मतलब जो लोकल प्रशासन है वहाँ पर DC है, SP है, कोई पुलिस मदद नहीं कर रही है आपको हेल्प यहाँ से? क्या करें हम यहाँ पे इस टाइम थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम है आज थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ। किसी चीज का आज जैसा तैसा करके हो रहा थोड़ा पूरा नेटवर्क इश्यूज है, सर्वर है नहीं।
तो 3 दिन के बाद थोड़ा सा अभी पॉज हो रही है। आप कौन से गांव से हैं यहाँ पर? हम लोग नगर से थोड़ा सा नीचे मछाड़ा है। नगर हैं, वहाँ पर कैसी हालत है? वहाँ तो ऐसा नहीं है, कुछ फलट नीचे पतली कुल के जितना नुकसान नहीं हुआ ना, वहाँ पे बारिश हुई, पर वो थोड़ा हाइट में है ना, इसलिए वहाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ऊपर ठीक है, ठीक है मैम। पर बिल्कुल कट ऑफ है आप? कट ऑफ है, मतलब ये है कि पतलीकुल में पुल तक आ सकते हैं आप, वो ब्रिज बंद है, ब्रिज के बाद आप या तो आप चढ़ के आओ या तो फिर आप पार ही रहो। हाँ, लेफ्ट बैंक से रोड ब्लॉक है, फिर आ नहीं सकते उधर को भी। आपका नाम? संगीता। आप कहाँ से आ रही हैं? पतलीपुर। इनको गर्भवती हैं, हॉस्पिटल लेके जाना है? डिलीवरी हो गया है। डिलीवरी हो गया है। और आप कहाँ जा रहे हैं अब? कुल्लू जा रहे हैं। कुल्लू जा रहे हैं, कहाँ पर? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? बच्चे को दिखाने के सुई वगैरह पड़ेगा ना। बच्चे को दिखाना है। तबीयत ठीक है आपका? ठीक है। You know, this is as dangerous because the desperate villagers trying their best to come to this side. I don't know why this man is attempting what he is. We are going to give it up from here because look at it. This is what is left of the road. That's it. That's the patch, and I will show you this man who's trying to come into this side, and you're practically on a ledge. And I have goosebumps looking at him doing this. Because there's a complete drop. That's the road where he's been. I really want to ask him what compelled him to do so. Sir, क्यों इतना dangerous करके इधर आए हैं? नहीं, बस आगे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था तब निकल रहा था क्या मैं। काम है आपको? बस कुछ नहीं। आगे कहाँ तक कटा हुआ है? आगे तो ये युगप आपका यही एरिया थोड़ा खराब है, बस बाकी तो ठीक है सारा। कोई और रास्ता है? क्योंकि हम आप जैसी हिम्मत नहीं रखते तो कहाँ से उस तरफ जा सकते हैं? आप आगे से जा सकते हो घूम के, आगे से जो ब्रिज है ना उससे ऊपर से रास्ता है जाने के लिए। ये निकलेगा, जो रास्ता टूटा है उसके आगे निकलेगा। रहते हो जी? ऊपर आते हैं पतलीपुर। चल के आए हो पतलीकुल से? कितना दूर है इधर से? थोड़ा दूर है। अभी कैसा हाल है उधर? पूरे हाल है। बह गया सब? Manali, the whole infrastructure has apparently collapsed. They have to bring anyone who's sick to Kullu, and there's just no way of getting there because at this side is where the road has caved in. The administration says that side is, they've been able to open out a road, but that's witnessing traffic jams of over 11 hours straight up. Reporting with camera person Pavan Kumar, Preeti Chaudhary for India Today.